कल अपन लोग क्या डिस्कस कर लिए थे? वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड द some GPS systems, okay, you can say some navigational satellite system of another countries, okay, and Mangalyaan I think we have started, clear? So today we have to, and we have discussed already that when the Mangalyaan, or you can say the Mars orbiter mission launched, and when it reached to the orbit of Mars, and after that the objective of Mangalyaan, okay, so some payloads we have to discuss today about the Mangalyaan. Fine. The Mangalyaan or also MOM, the Mars orbiter mission. Fine. So today we have to discuss about the payloads of Mangalyaan. ठीक है? Payloads of Mangalyaan. So here is some payloads. Payloads. The first one is the Lyman alpha photometer. Lyman alpha photometer. Okay. So in short form, it is known as the LAP. Clear? The first payload of the Mangalyaan. Okay. Actually, Lyman photo जो अल्फा मीटर है, ठीक है, it's actually used for the detection of, it is used for the detection of deuterium and hydrogen. Okay, you can say these are the derivatives of the hydrogen. Fine, derivatives of the hydrogen. And why the deuterium and the hydrogen is detection of the deuterium and hydrogen is needed? Because we know that hydrogen is responsible for the formation of H2O. Clear? H2O, this is the water. And if the hydrogen is found here, that means the chance to build up the water molecule. Okay, that means कि by the आप ये कह सकते हो, by the searching deuterium and the hydrogen, ठीक है, it may be create a conclusion regarding the formation of water. And if the water is formed anywhere, that means it is denoting the atmospheric presence. Okay, denoting the atmospheric presence. Clear? Okay. Deuterium सबको पता है क्या होता है? What is deuterium? Deuterium is actually isotopes of the hydrogen, right? And इसको 1s2, this is the deuterium. Okay, deuterium. आप लोगों ने हैवी वाटर सुना होगा? हैवी वाटर, okay, heavy water is this is the normal water H2O, okay, and the heavy water is D2O. Clear? D2O. And ऐसा माना जाता है कि जब बहुत approx 2.3 to 2.4 billion years ago, when the atmosphere is created at the surface of earth, okay, so at that time the heavy water is also formed. ठीक है? तो Lyman alpha photometer is here for the detection of the presence of deuterium as well as presence of the hydrogen. तो इससे ये पता चल जाएगा कि एटमॉस्फेयर है या मार्स पे या नहीं है, राइट? ओके, द नेक्स्ट पेलोड इज द MSM. Okay. Next payload is the MSM. This is the methane sensor for Mars. Second is the MSM, methane sensor for Mars. Clear? Methane, you know methane? Methane is a gas. The chemical formula is the CH4. Clear? And methane is also called the biogas. And this is also called the biogas. That means whenever methane is formed, okay, so that means some organic materials, some organic compounds are present in that particular environment where the methane is formed. आपको याद हो तो when we are very first class we have discussed about the organic evolution, okay, that means the origin of life. तो उसमें भी एक्सपेरिमेंट करके दोनों साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ द मीथेन लाइक गैसेस. ओके, मीथेन दैट मीन्स इट इज
related to the what? Biological presence. Okay, so MSM is inside the Mangalyaan for the detecting the presence of the methane at the surface of at the atmosphere, in the atmosphere of what? Atmosphere of Mars. Okay, okay. So next, third one. The third one is known as the, बहुत अच्छा नाम है इसका, मेनका. मेनका. Okay, मेनका is here stand for the Mars Exospheric Neutral Composition Analyzer. Mars Exospheric, okay, Exospheric Neutral Composition Analyzer. Composition Analyzer. Okay, that means this is a instrument, okay, which is responsible for the analysis of the exospheric composition. That means कि मार्स जो है, ओके, तो मार्स के एक्सोस्फेरिक जो भी इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में, ठीक है, एक्सोस्फेरिक और नॉट एटमॉस्फेरिक नहीं बोलेंगे उसको हम, एक्सोस्फेरिक जो सराउंडिंग में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ओके, तो व्हाट इज द एक्चुअली द कंपोजिशन ऑफ दैट exospheric components. Okay, so this Menka is responsible for the analysis of that composition. Okay, so Menka, this is the Mars Exospheric Neutral Composition Analyzer. Clear? Next one is the TIS. This is the TIS. The fourth one is the TIS. This is the thermal infrared imaging spectrometer. Clear? That means this is known as a TIS. What is the function of TIS? As per the name given that this is the thermal infrared imaging spectrometer, it is actually measure the temperature and the emissivity of the Martian surface, allowing for the mapping of surface composition and the mineralogy of Mars. That means thermal and infrared, all types of the imaging. Okay, infrared, that means ki any type of radiation is occur, so it is responsible for to detect or you can say to observe the emissivity. Emissivity, that means ki suppose that if the Martian surface pe is any emission is found here, so this is responsible for the detection of that emission. Okay, and after that thermal, that means ki it also detect the temperature of the Martian surface. Okay, so this is known as the tick. And next one is the the fifth one. Fifth one is known as the MCC. The fifth one is the MCC. Okay, and this is stand for the Mars Color Camera. Mars Color Camera. Okay, so very easy to understand that it will provide the images in the visual spectrum, fine, and providing context for the other instrument. Okay, color camera, that means कि visual spectrum में क्या करेगा, ये image provide कराएगा, fine. So these are the payloads of the Mars. Okay, now we will discuss about the Chandrayaan. Chandrayaan is very recent mission of the what? ISRO, and Chandrayaan 2 is actually launched in the year of 2020. Okay. But before launching the Chandrayaan 2, there is Chandrayaan 1 is also, and the Chandrayaan 1 was launched in the year of 2008. Okay, but the mission Chandrayaan 1 was the completely failed. वो पूरी तरीके से क्या था, फेल्ड था. ठीक है, कौन सा मिशन? चंद्रयान फर्स्ट. Chandrayaan first. Okay, the launch year was 2008. Okay, and what was the result? That was a failed mission. Okay, and this mission is actually launched for the
exploration of the moon. Okay, exploration of the moon and the moon's surface. Fine. So Chandrayaan 2 is actually the mission Chandrayaan 2. Okay, it is launched in the launch year is the 2019. मैं 20 बोला था क्या शायद स्टार्टिंग में, 20 बोला, करेक्ट करिए उसको प्लीज. This is the launch year is the 2019. Okay, and which launch vehicle is used? The launch vehicle was the GSLV. Okay, Mark 3. Okay, Mark 3. This is the cryogenic engine. Fine. GSLV Mark 3 is the cryogenic engine. Fine. ठीक है. And actually, what is the difference between the Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2, and why the Chandrayaan 2 is more important? Because at the lunar surface, so many countries have already reached, okay, with their rovers and with their satellites, fine, to study about the atmosphere of moon. But the moon have the two poles. This is the north pole and the second one is the south pole. The south pole is the darkest pole actually, because of the unreached sunlight. That means sunlight वहाँ पे completely पहुँच नहीं पाती है. So that's why the south pole is the darker. Okay. So the Chandrayaan 2 is actually planned by the ISRO to reach at the south pole. And south pole अभी तक क्या था? बिल्कुल south pole is a mystery. Okay, in reference of the moon. तो इसरो वॉज ट्राइंग दैट कि वो पहुंचेगा वहाँ पे, ठीक है, बट द मिशन वॉज एक्चुअली पार्शियली फेल्ड, ठीक, बिकॉज वी हैव प्लान्ड फॉर अ सॉफ्ट लैंडिंग एट द साउथ पोल ऑफ द मून. बट when the our lander is just far 2 kilometer approx from the surface of the moon, the contact of the satellites get failed, ठीक है, एट द अर्थ. जो भी सेंटर था वहाँ पे हमारा जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर है, ठीक है, वहाँ से क्या हुआ कि हमारा कॉन्टैक्ट क्या हुआ कि फेल कर गया. एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ हार्ड लैंडिंग अकर्स. ओके, तो वो क्या हो गया कि वो टूट गया, ठीक है, हमारा जो भी लैंडर था वो भी टूट गया, रोवर था वो भी टूट गया. फाइन. बट द ऑर्बिटर इज एक्चुअली रोटेटिंग अराउंड द मून, ठीक है, इन द ऑर्बिट ऑफ मून. So that's why this is the partially failed, not completely failed. Fine. So here is some payloads are given regarding the Chandrayaan 2. ठीक है, आओ देखे बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें पेलोड्स थे. एंड आप सब जानते होंगे क्योंकि खूब बहुत सारा न्यूज़ में था ये, ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि रिसेंट जो क्या था चेयरमैन ऑफ द इसरो के सिवान साहब, एक्चुअली ही वॉज क्राइंग, ठीक है, और पीएम मोदी को हक करके क्राइंग कर रहे थे, रो रहे थे बहुत ज़्यादा. अगर रोएंगे क्यों नहीं, क्योंकि भाई बहुत सालों का उनका अपना मेहनत होता है, बहुत सारे साइंटिस्ट का. फाइन. तो आफ्टर ऑल कोई नहीं, बैड लक हमारा कह सकते हो, बट इन नेक्स्ट टाइम इसरो विल डेफिनेटली रीच एट द मून. फाइन. चलो देखो इसको पेलोड्स की बात कर लेते हैं. द पेलोड्स ऑफ द चंद्रयान 2. ओके, द पेलोड्स इज द फर्स्ट इज द this one orbiter. Okay, orbiter आप सब पता है, as the name is given, orbiter, it is orbiting the moon in a 100 kilometer lunar polar orbiter. Okay, 100 kilometer lunar polar orbiter. lunar polar orbiter, ठीक है. lunar, whenever we will talk about lunar इज रिलेटेड टू द मून एक्चुअली, ठीक है, मून को ही क्या बोला जाता है, ल्यूनर बोला जाता है, ठीक है. ओके, लाइफ इज ऑलमोस्ट 7 ईयर. व्हाट इज द लाइफ ऑफ ऑर्बिटर? ऑलमोस्ट 7 ईयर्स, है ना. मोदी साहब की स्पीच सुनी होगी, उन्होंने बोला होगा कि चंद हमारा ऑर्बिटर अभी भी बिल्कुल एकदम बेबाक अंदाज से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, और अगले 7 साल तक क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहेगा. फाइन. तो दिस इज द लाइफ ऑफ ऑर्बिटर, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स. फाइन.
So here some payloads, orbiter is also here given. क्या क्या इसमें था? The first was the large area soft X-ray spectrometer. Okay, LASS. This is the large area soft X-ray spectrometer. Okay, that means at a, अब बात करें at a single take at a single time, ठीक है, by using the X-rays it is covering the large area. Fine. So this is the using for the mapping, ठीक है. एंड इसके साथ साथ LASS का साथ साथ क्या गया with one more payload is here and its name is the XSM. SXM. This is the solar X-ray monitor. Okay, solar X-ray monitor, and these two instruments are actually using for the mapping purpose. Okay, and which type of the major elements present on the lunar surface it will be identify and detecting those substances. Fine. Okay. The next one is the L and S band. ठीक है, हमने बात किया था ना L and S band. ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर राडार, सिंथेटिक अपर्चर राडार. ठीक है, अब स्टार्टिंग में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जनरल पेलोड्स ऑफ अ सैटेलाइट्स, देन सिंथेटिक अपर्चर राडार वाज डिस्कस्ड ओवर देयर. ओके, किया था वहाँ हमने टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द different constituents including the water and ice etc. Fine. Next one is the imaging IR spectrometer. Imaging IR spectrometer. Okay. Imaging IR spectrometer for the mapping of lunar surface over a wide wavelength range for the study of the minerals, water molecules and the hydroxyl present. Okay, that means this IR imager is actually for the what, for the identify, for the detecting, for the presence of water molecules, water droplets, as well as the ice molecules, as well as some minerals also, and the some hydroxyl compound is also here. ठीक है, इन सब को डिटेक्शन के लिए it is useful. This is the imaging IR spectrometer. This is the infrared spectrometer. Clear? Okay. The next one is here. This is known as the lander. ठीक है, lander. The lander of the Chandrayaan was named, क्या नाम था उसका? लैंडर विक्रम. ओके, विक्रम लैंडर इज हियर. ठीक है, किसके नाम पे दिया गया है? विक्रम साराभाई के नाम पे. ओके, तो द लैंडर इज हियर. ठीक है, तो here the lander name was the Vikram and this is planned for the soft landing. Okay, this is the name is Vikram. Okay, for the purpose of soft landing. Clear? Okay, और इसको ऐसा बनाया गया था कि इट विल बी क्या, इट विल बी ट्रैवल, सॉरी नॉट ट्रैवल, ट्रैवल तो रोवर करेगा, उस पर हम बात कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द रोवर. रोवर, व्हाट इज द नेम ऑफ रोवर? रोवर नेम वाज द प्रज्ञान. ठीक है, रोवर नेम वाज द प्रज्ञान. एंड प्रज्ञान, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रज्ञान? प्रज्ञान मीन्स होता है विजडम. ओके, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं उनको प्रज्ञान बोला जाता है. ठीक, इट मीन्स द विजडम. and wisdom for what? That is it have the, actually it is developed by the exploring, and it will travel up to 500 meter, up to 500 meter at the lunar surface. lunar surface ये 500 मीटर कम से कम रो करता. ठीक है,
ओके, रोम करता और एक्सप्लोर करता क्या, जो भी सरफेस की चीज़ें हैं उनको। फाइन, so this is the important payloads of the Chandrayaan 2. Clear? Here is प्रज्ञान का एक और यूज था. प्रज्ञान वॉज टू pick up the soil or the rock sample from the lunar surface and the perform chemical analysis and send the data to earth through the Chandrayaan 2 orbiter. That means कि ये क्या करता कि सॉइल एंड रॉक के सैंपल लेगा, सॉइल एंड रॉक सैंपल कलेक्ट करेगा. फाइन, आफ्टर दैट it will what, it will analyze them. Okay, fine. And which type of analysis is done by this? Chemical analysis. Chemical analysis. Okay, and the observed information is sent to the orbiter, and orbiter is finally providing the information to the control center. Okay, जो भी हमारे अर्थ पे कंट्रोल सेंटर होगा. फाइन, ओके. तो द नेक्स्ट वन इज द गगनयान. ठीक है. गगनयान. Okay, so Gagan is a Sanskrit word, na? Okay, and what is the meaning of Gagan? Gagan means sky. Okay, Gaganyaan is actually the India's first attempt कह सकते हो आप. ठीक है, in the what, in the human space flight mission. Actually in the year of 2018 the PM of India कौन था? नरेंद्र मोदी वही थे, है ना? Okay, he actually announced that the Gaganyaan will be the India's first human space flight, and it will reach at the space by the year of 2022. Okay, and after the announcement of the Prime Minister, Honorable Prime Minister, the Cabinet Ministry also provided the fund of approx 10,000 crore INR. Okay, and अब इसको अनाउंस कर दिया गया बट 2018 में. ओके, बट फ्रॉम द 2020 यू नो वेरी वेल द ग्लोबल सिनेरियो इज चेंज्ड ड्यू टू द कोविड-19. तो द मिशन इज़ थोड़ा सा लेट हो रहा है हमारा. हो सकता है कि 2022 में नहीं तो 2023 में वी विल डेफिनेटली रीच एट द स्पेस. And why this is important? Because this is the India's first human space flight. That means before this, the India never tried to send any human or any crew members at the space. Okay, so that's why the reason that this is the very important. Okay, actually this mission is included the 2 unmanned flight also. ठीक है, 2 unmanned flight. That means सर्च इसको टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 अनमैन्ड फ्लाइट भेजेंगे बाय द ईयर ऑफ 2020. ओके, एंड 21 जो कि अभी तक भेजे नहीं गए हैं, इसलिए लगता है कि शायद मिशन लेट हो जाएगा थोड़ा सा. फाइन, ओके. एंड आफ्टर रीचिंग, और यू कैन से आफ्टर द सक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ दीज 2 अनमैन्ड मिशन, द इसरो विल लॉन्च द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन या स्पेस फ्लाइट. ओके, so here is actually India is planning that ki it will send the 3 crew members. कितने? 3 crew members for 5 to 7 days. They will stay at the space. Okay, वो क्या करेंगे वहाँ पे? स्टे करेंगे, and they are actually stay at the low Earth orbit. Low Earth orbit. Okay, so approx 700 kilometer to 800 kilometer from the earth surface. Okay, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे ये सर्वाइव करेंगे. फाइन, ओके. एंड उसके बाद फिर वहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो भी रिसर्च है उसको परफॉर्म करेंगे. फाइन, एंड इफ द इंडिया would be the successful
ठीक है, रिगार्डिंग दिस, तो इट बिकम द फोर्थ कंट्री, ओके, टू रीच द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आफ्टर द रसिया, USA and the China. That means कि today nowadays till now only three countries here, ठीक है, जिन्होंने अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को क्या किया, सक्सेसफुल बनाया है. द फर्स्ट इज द रसिया, सेकेंड इज USA एंड द आवर नेबर कंट्री चाइना इज ऑल्सो टेकिंग द क्रेडिट अंडर दिस. ओके, चलो, बट अभी जब इंडिया करेगा तो इंडिया विल बिकम द फोर्थ कंट्री. फाइन. तो हियर इज सम कंपोनेंट्स ऑफ द गगनयान. ठीक है, फ्यूचर मिशन है, सो अभी इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स को डिस्क्लोज नहीं किया गया है. ठीक है, कुछ चीज़ें पता चली हैं. ठीक, ऑफिशियल जो भी आप कह सकते हो इंफॉर्मेशंस हैं जिनको मैं शेयर करूंगा आपके साथ. तो कंपोनेंट्स ऑफ द गगनयान. तो इन द गगनयान वी विल यूज द रॉकेट, you can say the launch vehicle. Which launch vehicle? GSLV Mark 3. Okay, GSLV Mark 3. After the great successful, okay, after the great successful of the Mars orbiter mission, ठीक है, and after the great successful of Chandrayaan 2, not Mars orbiter mission have used the PSLV. ठीक है, after the great success of the Chandrayaan 2, ठीक है. Now the GSLV is also a trusted launch vehicle of the ISRO. So in the Gaganyaan we will use this rocket named as the GSLV Mark 3, and GSLV Mark 3 is also known as the Bahubali, right? In the in the mission of the Chandrayaan 2, the GSLV Mark 3 is used. So the same rocket will be used in the Gaganyaan mission. Okay. थोड़ा सा क्रू मॉड्यूल्स के बारे में पता चला है. क्रू मॉड्यूल्स दैट मीन्स द थ्री एस्ट्रोनॉट विल बी, ओके, थ्री एंड द ऑल द थ्री एस्ट्रोनॉट्स और यू कैन से क्रू मेंबर्स विल बी द इंडियन. ओके, एंड इनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी. ठीक है, एंड द इन द ट्रेनिंग द फ्रांस विल हेल्प अस. ठीक है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए फ्रांस हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा. फाइन. तो दिस इज द क्रू मॉड्यूल्स एंड अप्रॉक्स 7 days the three crew members, three इंडियन क्रू मेंबर्स हैं ये. ठीक है, इंडियंस. ठीक है, दे विल स्टे अप्रॉक्स 7 days. ठीक है, एंड स्टे कहाँ करेंगे, एट द लो अर्थ ऑर्बिट. ओके, 700 to 800 किलोमीटर above than the surface of earth. फाइन. ओके, नेक्स्ट जो इसमें कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, दिस इज द, अब क्रू मेंबर्स जाएंगे तो वहाँ पहुँचने होंगे, वापस जब आएंगे तो सेफ्टी से लैंडिंग भी होनी चाहिए उनको. ओके, तो हियर क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक. नेक्स्ट वन इज द क्रू सॉरी crew module atmospheric re-entry technology. मैम फॉन्ट साइज ओके नो, फॉन्ट साइज ओके. crew module atmospheric re-entry technology. That means this is the manned spacecraft. Okay, so it need to come back and we cannot take any chances because the life क्या हो सकता है वहाँ पे, थ्रेट में पड़ सकती है. राइट. so for this, when the while it entering the earth atmosphere, the spacecraft need to withstand very high temperature. ठीक है, created due to the friction. वापस जब स्पेसक्राफ्ट आएगा कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा, तो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन द टेम्परेचर इज गेट इंक्रीजेज ऑफ द स्पेसक्राफ्ट. तो टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी होनी चाहिए कि स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय होने से हम इसको क्या कर सकते हैं, बचा सकें. फाइन. तो दिस इज द क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री टेक्नोलॉजी. विच टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड इन दिस, अभी तक वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं है. ठीक है, चलो. नेक्स्ट वन इज द एस्केप
सॉरी, क्रू स्केप सिस्टम, क्रू स्केप सिस्टम। ओके, जैसे आप फ्लाइट वगैरह में सफ़र करते हो, राइट, तो आप देखते हो कि उसमें क्या रहता है, स्केप सिस्टम रहता है फ्लाइट वगैरह में, कि अगर सपोज दैट कि कोई, अब आप बताओ, जो फ्लाइट सफ़र करते हो तो बोलते हैं कि सर हमारा जब जहाज जो पानी में लैंड करेगा तो आपको ये करना है एंड ऑल समथिंग, सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, फाइन। तो एक्चुअली दैट इज़ द स्केप सिस्टम। और इन केस ऑफ द कोई लॉक हो जाता है हमारा डोर, जो भी डोर होते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस वी विल यूज़ द इमरजेंसी डोर, इमरजेंसी एग्जिट, फाइन। तो उसमें बताते ना, अगर यार ऐसे खोलना वैसे खोलना, फाइन। तो दिस इज द एक्चुअली क्रू स्केप सिस्टम। तो टाइप दिस द क्रू स्केप सिस्टम इज ऑल्सो हियर इन द केस ऑफ गगनयान। ओके, सो इट विल बी एन इमरजेंसी, ठीक है, अवॉइडेंस मेजर, ठीक है, डिजाइन टू क्विकली गेट एस्ट्रोनॉट एंड द स्पेस क्राफ्ट अवे फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल इफ अ माल फंक्शनिंग अकर्स ड्यूरिंग द लॉन्चिंग। सपोज दैट कि जैसे लॉन्च कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे समझो आप, दिस इज द GSLV, ठीक है, यहाँ पे GSLV है। कितने स्टेज हैं साहब? 3 स्टेज हैं, भूलो मत, ठीक है, अभी थोड़े दिन ही हुआ है पढ़ते हुए। 3 स्टेज है, दिस इज द GSLV, क्लियर। स्टेज 1, 2 एंड 3। एंड हियर इज वॉट, यहाँ पे क्या है हमारा, स्पेस क्राफ्ट है। ओके, दिस इज द स्पेस क्राफ्ट, क्लियर। सपोज इट, ये लॉन्च होता है, क्लियर, एंड आफ्टर द लॉन्चिंग देयर इज एक्चुअली एक्सप्लोजन बिटवीन द स्टेज 1 एंड स्टेज 2, ठीक। दोनों स्टेज के बीच में क्या हुआ, एक्सप्लोर हुआ, ठीक है, दे बोथ स्टेजेस गेट एक्सप्लोडेड, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ। तो एट दिस टाइम, ठीक है, द स्केप सिस्टम, क्रू स्केप सिस्टम इज व्हाट, वेरी एडवांस, मस्ट बी। ओके, अब इसमें होगा क्या कि ऑटोमेटिकली जब यहाँ पे किसी तरह का एक्सप्लोजन होगा तो ये जो पेलोड्स वाला जो स्पेस क्राफ्ट वाला एरिया है ना, ये अपने आप क्या हो सकता है, यहाँ से बाहर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ये यहाँ से बाहर इजिली निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द क्रू स्केप सिस्टम, ठीक। तो दिस इज ऑल आर अबाउट आवर इसरो, ओके, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। थोड़ा सा अगर हम बात करें अनदर एजेंसीज के बारे में, तो उनके कुछ दिए गए हैं, जैसे मिशंस दिए गए हैं, राइट, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस टेक्नोलॉजी, और स्पेशली अबाउट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो सम कंट्रीज आर हियर जिनके मिशंस को थोड़ा सा हमें बात करना पड़ेगा, एंड इन विच स्पेशली दी नासा इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। तो नासा के कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं, कुछ मिशंस हैं यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक। जैसे हम्म एक नासा का एक मिशन है, दिस इज नोन एज द क्यूरियोसिटी रोवर। क्यूरियोसिटी रोवर, ठीक, ओके। क्यूरियोसिटी रोवर इज एक्चुअली डिजाइन टू एक्सप्लोर द क्रेटर, ठीक है, एंड क्रेटर वेयर एट द मार्स, क्रेटर क्रेटर गेल एट द मार्स, ठीक है। व्हाट इज द क्रेटर, जब भी कभी आप वोल्केनो होती है ना, व्हेन द वोल्केनो इज व्हाट, वो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाती हैं, ठीक है, तो ब्लास्ट होने के बाद दे क्रिएटेड अ क्या, क्रेटर, एंड आफ्टर दैट हो सकता है कि ये बहुत सारे भाई किलोमीटर्स में हो सकते हैं, फाइन, क्रेटर लाइक क्या आप बात बोल सकते हो, कोई एक गड्ढे टाइप का स्ट्रक्चर, फाइन, तो क्रेटर। तो द क्यूरियोसिटी रोवर ऑफ द नासा इज डिजाइंड फॉर द व्हाट, फॉर द क्रेटर गेल डिटेक्शन, ठीक है, एक्सप्लोर द क्रेटर गेल on the Mars as a part of NASA's Mars Science Laboratory. Okay. A main goal is the, इसका मेन जो गोल है वो क्या है, द मेन गोल इज द हेल्प डिटरमाइन टू हेल्प डिटरमाइन
whether whether Mars could ever could ever have have supported life. Okay, supported life, as well as determining the role of water and to study the climate and the geology of Mars. ठीक है, ये पहला, the first goal is that, the second is the, as well as the detection of water, detection of water. Okay, detection of water and climate and geology of Mars, study of climate and geology of Mars. Okay, so these are the goals. Okay, goals of the Curiosity rover of NASA. किसका मिशन है ये? NASA. ठीक है. Okay, the next one is the Artemis mission. ठीक है. Next one is the Artemis mission. Okay, and this is the mission in reference of moon, actually moon mission. ठीक, moon mission, and we know that landing the American astronaut, including the first one and the next man on the moon by 2024. ये बोल रहे हैं कि by the 2024, by 2024 the NASA will what, launch this mission, and this mission will be carry a first woman astronaut at moon. ओके, दैट मीन्स जो एस्ट्रोनॉट हो वो क्या होंगी, वो कोई वोमन होगी. ठीक है, ऑन द मून, और बाय द 2024. ठीक है, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्टेमिस, ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ द आर्टेमिस मिशन. दिस इज द ऑब्जेक्टिव्स: इन्वेस्टिगेट द मून्स मिस्ट्रीज, investigate the moon's mysteries. Okay, that means the unsolved mysteries about the moon will be investigated by this Artemis mission. Okay, find and use water and other critical resources. Next इसका है find and use water and other critical resources. Okay, that means the presence of water, etc and etc. ठीक है, so find out the presence of water and another critical resources or minerals including methane, biogas, etc. Fine. Okay, next is the learn how to, next objective, next is the learn how to live and operate on the surface of another celestial body, on the surface of another celestial body. Okay, that means कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से if we are just crossing our earth and reach the another planet, or you can say the another celestial body, then how can we survive, how can we live at that another, or you can say the foreign surface. ठीक है,
Next is the Lucy. About the Lucy mission, Artemis mission, Lucy mission. नेक्स्ट इज द लूसी. ओके, कभी पूछता नहीं है ये चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा आप जानते रहो. लूसी, दिस इज एक्चुअली स्पेस प्रोब. ठीक है, एंड इट विल एक्चुअली tour 5 Jupiter Trojan asteroid which share the Jupiter's orbit around the sun. Actually, this is the Lucy's regarding the Jupiter. ठीक है, this will be a Jupiter mission. इतना जानो. ठीक, एंड बहुत सारे ऐसे इसमें हैं. सम आर द नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस. Okay, these are the some missions. What missions of the NASA? थोड़ा सा इसमें अनदर उस पर बात कर लेते हैं. हमारे कुछ और भी जो एजेंसीज हैं. Next one is the lunar evacuation system. Lunar evacuation system assembly known as the LISA. Okay, LISA. Actually, this is the mission of European Space Agency. Okay, किसका मिशन है ये? यूरोपियन स्पेस एजेंसी. फाइन. एंड what is this mission? Actually, it developed and did the underwater testing of lunar evacuation system assembly. ठीक है, and it is a pyramid type structure whose purpose, इसका purpose, what is the purpose? Purpose to rescue an astronaut if he or she, ठीक है, suffers an injury on lunar surface. Okay, that means this is a what? This is a, आप कह सकते हो, chamber like structures. Okay, and this is developed by the European Space Agency. Clear? So European Space Agency has developed this, and for what? For the, they suppose that if the कोई एस्ट्रोनॉट है वो कहीं पे क्या है, स्टक आउट हो गया है, फंसा हुआ है. ठीक, तो फॉर द रेस्क्यू, एंड स्पेशली कहाँ पे? एट द ल्यूनर सरफेस. एंड इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया, डेवलप किया गया. वी नो दैट एट द ल्यूनर सरफेस द एटमॉस्फेयर इज नॉट प्रेजेंट. ठीक है, तो दैट मीन्स वहाँ पे कुछ अलग ही होगा, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी. ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं. तो एट दैट कंडीशन दिस lunar evacuation assembly will help to rescue the astronauts. ठीक है, चलो. Next is the Tiangong 2. Tiangong 2 is the Chinese laboratory. ठीक है, क्या है ये? Tiangong 2. Okay, it is a Chinese space laboratory. Space lab. Clear? And it hosted 2 Chinese astronauts for a month, making it the longest manned mission
ऑफ चाइना सो फॉर, ठीक है। एंड द स्पेस मिशन वॉज डिस्ट्रॉयड अपॉन इट्स कंट्रोल्ड री एंट्री इंटू अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। बोल रहे हैं कि ये टियानगोंग 2 इज अ चाइनीज स्पेस लेबोरेटरी, ठीक है, इन विच यहाँ पे 2 एस्ट्रोनॉट को क्या किया गया, रखा गया, ठीक है, ठीक है। कहाँ पे रखा गया, स्पेस में, क्लियर। चाइनीज एस्ट्रोनॉट फॉर अ मंथ, ठीक, फॉर अ मंथ, 2 एस्ट्रोनॉट फॉर अ मंथ, क्लियर। तो जैसे अपन लोग प्लान कर रहे हैं, वी आर जस्ट प्लानिंग फॉर द गगनयान मिशन, तो द चाइना हैव डन द यांगोंग 2 मिशन, ओके, एंड दिस स्पेस मिशन वाज डिस्ट्रॉयड अपॉन इट्स कंट्रोल्ड री एंट्री इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। डिस्ट्रॉय हो गया था ये, ठीक, क्योंकि जब री एंट्री करता है अर्थ एटमॉस्फेयर में तो इसका कंट्रोल ख़त्म हो गया था। फाइन, नेक्स्ट। दिए तो बहुत सारे हैं लेकिन ऑल आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक। तो मुझे थोड़ा सा उसमें से स्क्रीन आउट करना पड़ रहा है। ओके, केपलर मिशन। केपलर मिशन, ठीक है। केपलर मिशन इज एक्चुअली द स्पेस ऑब्जर्वेटरी एंड लॉन्च्ड बाय द नासा। दिस इज द स्पेस ऑब्जर्वेटरी, ओके, एंड लॉन्च्ड बाय नासा, क्लियर। Actually, it is designed to survey the मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी, टू डिस्कवर अर्थ साइज प्लैनेट, टू डिस्कवर अर्थ साइज्ड प्लैनेट, ओके, एंड it detects the presence of planets by drop in brightness of stars during the transit. Kepler mission has retired and is succeeded by TS mission. Okay, so here this the Kepler mission, ठीक है, and actually it was a successful mission of the NASA, ठीक। इट्स अ काइंड ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेटरी, स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ये करेगा क्या, मतलब क्या किया था इसने कि दिस इज डेवलप्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। जो हमारी गैलेक्सी है उसको कौन सी गैलेक्सी बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। एंड मिल्की वे गैलेक्सी में दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डिस्कवर द अर्थ साइज अनदर प्लैनेट। दैट मीन्स कि उसको ये करना था कि अर्थ के साइज का कोई और भी प्लैनेट है या नहीं हमारी गैलेक्सी में, इसका सर्च करना था, ठीक है। दिस इज द केपलर मिशन, ओके। नेक्स्ट वन इज द हबल मिशन। Hubble mission, and Hubble mission is actually joint project. This is the joint project of NASA and European Space Agency, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एंड पहला जो टेलीस्कोप बना था, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्पेस टेलीस्कोप, तो द साइंटिस्ट नेम वाज द एडविन हबल, ठीक है। क्या नाम था उनका, एडविन हबल, ओके। एंड on the name of the Edwin Hubble, the mission named is the Hubble mission, clear, and it can observe in the multiple wavelength near infrared visible light and UV spectrum, ठीक है। और ये जो टेलीस्कोप है, ठीक, ये ऑब्जर्व कर सकता है क्या, मल्टीपल वेवलेंथ नियर infrared. That means it can take the what, take the
images, ठीक है, it can observe the objects at the multiple wavelength, ठीक है, and at the infrared level also, visible light, invisible light, and the and UV spectrum as well, ठीक है, UV spectrum, ठीक. So the it is launched, this Hubble mission launched, ठीक है, in the orbit of altitude of 524 किलोमीटर ऑर्बिट, ठीक है, 524, दैट मीन्स दिस इज द लो अर्थ ऑर्बिट, वहाँ पे इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है. एंड द इट विल हेल्प टू डिस्कवर द इंक्लूडिंग द डिस्कवरी ऑफ स्मॉलेस्ट नोन एज द डार्क मैटर क्लम्प्स, ठीक है, जो डार्क मैटर्स वगैरह हैं उनकी डिस्कवरी में इसका क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा हबल मिशन का. फाइन. नेक्स्ट. ओके, ठीक है, ये सम इम्पोर्टेंस है जिनको हमने डिस्कस किया है. बाकी द PDF विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें देख लेना. कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए गए हैं, उसको आप सिंपल पढ़ करके आप समझ सकते हो, कोई इसमें इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है. फाइन. ओके, so now the complete space technology we have discussed. So now we will discuss about the defense technology. We are just moving for the defense technology, ठीक है, our next chapter. तो डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the defense? When we talk about the defense, so we know that defense for a country to protecting the integrity and maintaining the sovereignty of any country, ठीक है, and protecting the international borders, protecting the unity and the protection of the geo-economic interest of any particular country, ठीक है, nation is known as the defense, ठीक है. And defense is not allowing any kind of the threats to enter into the country through land, sea or air, ठीक है. दैट मीन्स कि अगर डिफेंस सिस्टम आपको मजबूत है तो ये इट विल मेंटेन द सॉवरेनिटी ऑफ अ कंट्री. So by using the technology, the developments regarding the defense of any country, okay, is considered as the defense technology. India, yeah, you can say that India's defense system has been divided into actually 3 services, ठीक है. That means India have the 3 armed services. The first one is the Indian Army, second one is the Indian Air Force, and third one is the Indian Navy, ठीक है. And all the 3 armed forces are responsible to protect the India at all the 3 levels, okay. That means the Indian Army is protecting the India's border, India's international border at the land surface, okay, fine. And for the coastal border areas, the Indian Navy is responsible, ठीक है. And at the aerials, for the aerial security, the Indian Air Force is responsible, ठीक है. So these 3 armed forces are responsible to maintaining the sovereignty and the security of the India, ठीक है. And if you are talking about that कि Indian Army, Indian Air Force, so we know that more than 1.3 million active personnel, ठीक है, in the Indian Army. That means कि 1.3 million, approx 13 lakh, okay, approx 13 lakh Indian soldiers are what, in active mode, ठीक है. जो रिजर्व में रखे हैं उनकी बात नहीं की जा रही है, एक्चुअली दे आर इन एक्टिव मोड. एंड वी नो दैट द इंडिया हैज़ द, आई थिंक, थर्ड लार्जेस्ट आर्मी, ठीक है. द इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट आर्मी आफ्टर द चाइना एंड USA, ठीक है. चाइना के पास सबसे ज़्यादा है, फिर USA है, फिर इंडियन आर्मी है.
But if we are talking about the endurance and the strength of the army, then we will find that India is actually capturing the peak, you can say a zenith level, a zenith place, ठीक है, फॉर द एंड्योरेंस एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक। और बहुत ही क्या, बहुत ही डेंजरस आर्मी हमारी मानी जाती है इंडियन आर्मी, ठीक है। एंड यू नो दैट कि इतना ज़्यादा क्या बोल सकते हो उसको, देशभक्ति एंड सब कुछ पैट्रियोटिज्म है इन इंडिया, कि वो उन चीज़ों को, एंड्योरेंस को, कैपेबिलिटीज़ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, फाइन। एंड so many examples regarding the endurance and the capability of the Indian Army in the past, ठीक है, चाहे वो बात करें 47 की या बात करें 65, 71, ठीक है, या 99 कारगिल, ओके, 99, ठीक है। तो इंडियन आर्मी के बारे में आप सब जानते हो। एंड 6 ऑपरेशनल कमांड्स आर सिचुएटेड इन द इंडिया, नॉर्थ कमांड, वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, ईस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, ओके, एंड द ट्रेनिंग कमांड, ठीक है। तो इसमें सारा सब दिया हुआ है कहाँ क्या है, ठीक है। उधमपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, ये सब आप देख लेना, ठीक, PDF मिलेगा आपको। तो हाँ, नाउ इंडियन फोर्स, इंडियन एयरफोर्स, सॉरी, इंडियन एयरफोर्स हैव द करेंटली 1,27,000 प्लस एक्टिव पर्सनल, ओके, एंड इंडियन एयरफोर्स हैव द 5 ऑपरेशनल कमांड्स, ठीक है। इंडियन आर्मी के पास 6 है, इंडियन एयरफोर्स के पास कितने हैं, 5 ऑपरेशनल कमांड, ठीक है। इंडियन नेवी, अबाउट द इंडियन नेवी, 58,000 प्लस एक्टिव पर्सनल इन इंडियन नेवी इज करेंटली, ठीक है। 3 ऑपरेशनल कमांड इज ऑल्सो हैविंग द इंडियन नेवी, ठीक है। और आपको पता है कोस्टल बॉर्डर को मोस्टली ये इंडियन नेवी हमारे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ कोस्ट गार्ड्स वगैरह जो इंडियन कोस्ट गार्ड्स होते हैं उनके साथ में, फाइन, ओके। So if we are just talking about the India's defense system, or you can say the India's defense program or India's defense policy. So always India defense policy aims to promoting and sustaining the durable peace in the subcontinent. That means India always in favor of the peace. Okay. Never in favor of the what, कि किसी भी तरीके का कोई उपद्रव बढ़ाना, ठीक है, या अपना वर्चस्व दिखाना, फाइन। वी आर नॉट एक्सट्रीमिस्ट, ओके। और एक्सपेंशन में हम लोग बिलीव नहीं करते हैं उस लेवल पे, जैसे कि हमारे नेबर कंट्री, जैसे सपोज आप कह सकते हो चाइना हमारा है ना। चाइना क्या करे, नहीं तो पूरा का पूरा क्या कर सकता है, तो उसको पूरा एशिया ही वो कैप्चर कर ले, फाइन। तो एक्सपेंसिज्म बहुत ज़्यादा, एक्सपेंशन करने की बहुत सोचता है चाइना, ठीक है, ओके। व्हेन वी विल टॉक अबाउट द नेशनल सिक्योरिटी, यू कैन से द इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कि आई विल कवर दैट टॉपिक ऑल्सो, ठीक है, फॉर यू। तो उसमें हम बात करेंगे अबाउट द चाइना पॉलिसी, ठीक है। चलो, तो इंडिया का जो डिफेंस पॉलिसी है, ऑलवेज बिलीव इन द promoting and the sustaining durable peace in the subcontinent, while at the same time equipping the defense force adequately to safeguard against any aggressions. That means कि हम शांति तो चाहते हैं, ठीक है, it's okay that we are in favor of the peace, but we also very well prepared and we will also try our level best, okay, to equipped our defense forces, ठीक है, with high technology, with high technical weapons, with high technical war weapons, clear। तो हमें पीस तो चाहिए, बट ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर कोई भी अगर कोई यानी एग्रेशन इज हियर ओवर द इंडिया, तो इंडिया विल नॉट टॉलरेट दिस, ठीक है, इंडिया विल नॉट टॉलरेट दिस। और सब आप सब इस समय न्यूज़ में बने हो तो अब तो पता ही है ना, आफ्टर द उरी अटैक इंडिया कैसा हो चुका है, ये नया इंडिया है साहब, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, ठीक है। तो द इंडिया इज नॉट चेंज्ड, ठीक। एंड इफ वी आर जस्ट लुकिंग दैट व्हाट इज द डेवलपमेंट्स
of the defense technologies and the defense armaments, ठीक है, by the India or you can say by the Indian organizations. तो हम ये देख रहे हैं कि अभी कुछ सालों में वी आर एक्चुअली रनिंग प्रोग्रेसिवली, ठीक है, रिगार्डिंग दिस, ठीक. द डीआरडीओ, सब जानते हो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. दिस इज द मेजर ऑर्गेनाइजेशन इन द डिफेंस सेक्टर, ठीक है. एंड द डीआरडीओ इज एस्टैब्लिश्ड इन द 1958 and DRDO have the slogan and slogan is that DRDO का अपना खुद का स्लोगन है, ठीक है. वो स्लोगन क्या है? द स्लोगन इज दैट बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है. इन संस्कृत द स्लोगन इज गिवन एंड द स्लोगन इज बलस्य मूलम विज्ञानम. ओके, तो बलस्य मूलम विज्ञानम इन संस्कृत. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बलस्य मूलम विज्ञानम? द बलस्य मूलम विज्ञानम मीन्स द साइंस इज विज्ञान, ऐसा समझो. इसका पहले हिंदी समझो आप. बलस्य मूलम विज्ञानम, दैट मीन्स विज्ञान बल की जड़ है. ओके, दैट मीन्स इफ यू आर डेवलपिंग योर टेक्नोलॉजी, if you are developing your science technology, if you are developing your science, so you are increasing your endurance, you are increasing your strength. Okay, that means in English quotation you can understand that science is the ornaments of power or strength. Clear? Science is the ornament of. Okay. Actually under the Ministry of Defense, ठीक है. कौन सा डिफेंस मिनिस्टर इस समय कौन है? Who is the defense minister? Just comment below. ठीक है. So under the Ministry of Defense, the Department of Defense is actually formed, and in which the Department of the Defense Production, Department of Ex-Servicemen Welfare and the Defense Research and the Development Organization. These are the four departments or organization which is governed by the Ministry of Defense. So DRDO is in the direct control of the Defense Minister. Fine. Okay. And the scientific advisor of the Defense Ministry is the head of DRDO. ठीक है. That means Defense Ministry का जो भी scientific advisor होगा वो क्या होगा? Head of the DRDO. DRDO take care of developing defense technology, ठीक है, which covers different fields such as aeronautics, ठीक है. Aeronautics कैसे बात करेंगे? Armaments, electronics, ठीक है, land combat engineering, life sciences, materials, missiles, agriculture, communication system and the naval system. Okay, that means this is responsible to design and developing technology and the technology regarding the defense system of our nation, defense system of India. Okay, and it also provides the defense services, also provide our defense services. Clear? This DRDO is correct answer. ठीक है, अच्छी बात है, सबको पता होगा, बहुत जनरल सा क्वेश्चन था. फाइन. ओके. So this DRDO is responsible for the development of the technology and the
technology regarding the defense. Clear? Now we know that in the year of 1947, the India got actually freedom, and the two nation is formed after the division of complete India, है ना? क्या क्या? पाकिस्तान एंड इंडिया. ठीक है, दो नेशन बने. एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज द नेहरू. ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू. उस समय देश हमारा जस्ट डिवाइड होके अलग हुआ था. तो देयर वाज so many major complications. Actually, the India is facing so many major complications, in which the defense is one of them. ठीक है, उनमें से डिफेंस क्या था? एक. एंड according to the some government policies and policies regarding the bilateral policies, you can consider that the foreign policies. ठीक है, इसमें क्या था कि फॉरेन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग इंडिया कुछ कंट्रीज से हेल्प लिया, एंड द रसिया वाज वन ऑफ देम. ठीक है, रसिया ने हमें हमेशा से क्या किया? हेल्प किया. ठीक है, यूएस भी बाद में करना स्टार्ट कर दिया. ठीक, ओके. धीरे धीरे क्या हुआ कि वी आर एक्चुअली डिपेंडेंट फॉर द व्हाट? वी आर डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई, फॉर द सप्लाई of the what? Defense armament, defense system, defense what? Missiles, aircrafts, helicopters, guns, okay, pistols, rifles, LMG, SMG, okay, warships, etc and etc. और फिर मतलब बात वहाँ पे समझने वाली बात है कि दी इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स विच आर एक्चुअली outdated, or you can say the decommissioned from the other countries. ठीक है, जब वहाँ पे वो decommissioned हो जाते हैं तो वो बेच देते हैं. किसको? इंडिया जैसे कंट्री को. ठीक है, तो क्या कर देते हैं? बेच देते हैं. एक नाम आता है, आप लोगों ने खूब सुना होगा, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना? आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल्सो. ठीक है, द ग्रेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. ठीक है, एंड वाई ही इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? बाय द ईयर ऑफ 1983, एक्चुअली इन द लीडरशिप ऑफ द मिसाइल मैन, in the leadership of Dr. APJ Abdul Kalam, the India is started its first missile development program. Okay, and APJ Abdul Kalam Sahab was the leader, and under the guidance of Kalam Sahab, the program is initiated. Okay, and that program is known as the Integrated Guided Missile Development Program. That means Integrated Guided Missile Development Program. कैसी मिसाइल्स? इंटीग्रेटेड और गाइडेड. दैट मीन्स वी कैन मेक आवर कंट्रोल. ठीक है, गाइड कर सकते हैं हम उस मिसाइल्स को. फाइन. तो द इंडिया हैव स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1983 विच इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, and the main objective of this program was that India will develop the comprehensive range of the missiles. Okay, comprehensive range of the missiles. comprehension समझते हो अपना? okay, that means कि एक अच्छे रेंज की मिसाइल्स को डेवलप कर. फाइन. दैट मीन्स कि मिसाइल्स कुछ किलोमीटर से स्टार्ट होकर के 1000 ऑफ किलोमीटर तक उसका रेंज हो अप्रॉक्स. ओके, और लीडरशिप किसकी थी? मिसाइल मैन की. ठीक, एंड इन द IGMDP प्रोग्राम एक्चुअली इंडिया इज जस्ट स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ 5 मिसाइल्स. हाउ मेनी मिसाइल्स? 5 मिसाइल्स. एंड द मिसाइल्स नेम was the
शॉर्ट में आप एब्रीवेशंस में ऐसे लिख सकते हो, PATNA. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार? पटना. Okay, so these are the missiles, the Patna. The P is stand for the Prithvi. Okay, A is stand for the Agni. T is stand for the Trishul. N is stand for the Nag. And A is stand for the Akash. Okay, so these are the 5 missiles: Prithvi, Agni, Trishul, Nag, and the Akash. ठीक. From 1983, this is started, and till 2007 the program is running. Program ran actually. ठीक है, run. Prithvi and Agni missiles. These both missiles are developed by the Dr. APJ Abdul Kalam, and that is the reason why the Abdul Kalam Sahab have named as a missile man of India. ठीक है, चलो. In the year of 2008, the government of India actually announced the successful completion of IGMDP. ठीक है, that means in the year of 2008 the government of India announced that now the IGMDP, Integrated Guided Missile Development Program, is successfully complete. ठीक है, okay. These 4 missiles actually developed by the this program. Nowadays all these missiles are using, ठीक है, in the defense sector. Okay, और अब तो इन सब के बहुत सारे वर्जन्स क्या किए हैं, डेवलप किए जा चुके हैं बाय द DRDO, बाय द इंडिया. ठीक है, एंड इनका जो ये जो मिसाइल थे ना, इनका अपना खुद का क्या था, एक रेंज था. ठीक है, कि हाउ मेनी किलोमीटर्स, ठीक है, द मिसाइल, द पृथ्वी मिसाइल कैन हिट द टारगेट. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रेंज, ठीक, मिसाइल्स को बहुत सारे क्लासेस में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है. ठीक है, एंड अभी इस पे हम बात करेंगे. व्हेन वी विल टॉक अबाउट द मिसाइल्स, देन वी विल फाइंड दैट व्हाट इज द मिसाइल्स एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ मिसाइल्स. चलो, सो दिस इज द IMDP प्रोग्राम, द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, चलो, अब सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द मिसाइल. क्या होते हैं मिसाइल? व्हाट इज मिसाइल? कोई एक दो वर्ड कोई बताना चाहे कमेंट में. देखो, मिसाइल इज एक्चुअली कन्वेंशनल वेपन. ठीक है, कन्वेंशनल एज वेल एज स्ट्रैटेजिक वेपन. ठीक है, हाउ दिस इज कन्वेंशनल एंड हाउ दिस इज strategic. Conventional, that means कि so many small range missiles, short range missiles are here which can be used frequently in any war. ठीक है, but some strategic missiles are here which are not using frequently. Okay, जैसे कि बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स, एग्जाम्पल्स द पृथ्वी मिसाइल, एग्जाम्पल द अग्नि मिसाइल्स. ओके, इनको क्या किस लिए रखा गया है? इनको केवल बताने के लिए रखा गया है कि देखो हमारे पास भी है. ठीक है, अगर ज़्यादा कुछ बोलोगे तो जस्ट फायर ऑन यू. ठीक है, तुरंत क्या कर देंगे हम, उसके आपके ऊपर क्या करें, छोड़ देंगे. मतलब हम कमज़ोर नहीं, इतना समझो. ठीक, तो दी आर द स्ट्रैटेजिक टाइप मिसाइल्स. ठीक, कन्वेंशनल मिसाइल में बहुत सारे, आकाश, नाग, त्रिशूल,
नाग इज द बेस्ट एंटी टैंक मिसाइल. मतलब कि अगर नाग को छोड़ दिया तो एंटी टैंक मिसाइल, दिस इज द एंटी टैंक मीन कि इट विल डिस्ट्रॉय द एनी काइंड ऑफ टैंक. ओके, चाहे जितना एडवांस, बेस्ट एंटी टैंक मिसाइल. नॉर्मली वी कैन यूज एंड वी हैव यूज्ड एक्चुअली इन आवर वॉर्स. जब ये क्या बोलते हैं, अब्दुल हमीद साहब ने जब डिस्ट्रॉय किया था, बहुत सारे टैंक डिस्ट्रॉय किए थे पाकिस्तान आर्मी के ना, 71 में उठा लाया था सब उठाकर, राइट. ओके, चलो. So missiles are actually दिवाली रॉकेट लाइक स्ट्रक्चर. दिवाली का रॉकेट देखा है ना. एंड दिस दिस इज अ आर्मामेंट. ठीक. एंड बाय यूजिंग द मिसाइल, ठीक, वी कैन लॉन्च, वी कैन फायर द मिसाइल फ्रॉम our own territory region to any enemy territory, over the enemy territory. That means we there is no need to show your presence in the enemy territory. आपको वहां पे जा करके उसको लॉन्च करने की जरूरत या उसको फायर करने की जरूरत नहीं है. वाई? बिकॉज इनका रेंज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. ठीक. रेंजेस आर varied and the at the different variants of the missile. Okay, the ranges are started from the single digit kilometers, that means 5-6 kilometers to over 10,000 kilometers. That means the you can fire the missiles from your nation to any continent, or you can say from India to Africa continent, like. Okay, तो इसको लेके आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली इसको यहाँ से लॉन्च कर सकते हो. ठीक. एंड अकॉर्डिंग टू द लॉन्च पाथ, यू कैन से द पाथवे ऑफ द मिसाइल, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मिसाइल. ठीक. द मिसाइल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. ओके, बहुत सारा न्यूज में सुने होंगे आप. द मिसाइल्स आर 2 टाइप्स. द फर्स्ट वन इज द ballistic missiles. Okay, and second one is the cruise missiles. Cruise. What is the basic difference between the ballistic missiles and cruise missiles? सुना तो होगा सब लोगों ने ना, ballistic missiles and cruise missiles. And if you are very, क्या बोल सकते हो उसको कि current affairs से, if you are very aware of the current affairs or news or newspaper, so many of the times in the news you have heard about the ballistic missiles, that India have tested the new variant of the Prithvi ballistic missiles, like something. This is the news headline. सुन ली ballistic. You can say Israel have tested the supersonic BrahMos cruise missile. BrahMos सुना ना, BrahMos, the joint venture of the India and the what? Moscow river, yeah, Russia. ठीक है, ब्रह्मोस. चलो आओ देखो बात करो. So what is the ballistic and what are the cruise missiles? Actually, ballistic missiles. Okay, this is the classification on the basis of trajectory path. ठीक है, कि किस पाथ पे उसका क्या है, मूवमेंट हो रहा है. ठीक. ओके. So actually the ballistic missile is the trajectory of the ballistic missiles is just like a rocket. ठीक है, दिवाली वाला रॉकेट ना, बॉटल में रख दिया, लगा दिया एकदम ऐसे गया उड़. ओके, ठीक है. चलो. Actually the ballistic missile is following their ballistic path. Ballistic path, that means it always, or you can say oftenly, the ballistic missile will be launched at the angle of inclination of the 45 degree. कितना साहब? 45 degree.
right? Approx 45, ठीक, like this, and it will follow the ballistic trajectory, clear? And this is the earth atmosphere, ठीक है, clear? तो firstly it will cross the what, earth atmosphere, and reach to the exosphere, fine, and after crossing this it will return, ठीक है, क्या करेगा ये, रिटर्न होगा, and due to the 45 degree launch angle it will cover the maximum range, this is the target, and hit the target and destroyed that, ठीक है, दैट मीन्स कि एक बार ये क्या करेगा, ये बिल्कुल बैलिस्टिक पाथवे को फॉलो करेगा, ठीक है, इट विल जस्ट exit from the earth atmosphere and after that get the re-entry, okay, and return to the atmosphere of earth and just hit the target, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द बैलिस्टिक पाथ, कैसा पाथ है ये, बैलिस्टिक पाथ, बैलिस्टिक पाथ, ठीक, बैलिस्टिक मिसाइल that follows a suborbital ballistic flight path, ठीक है, similar to the Diwali rocket with the objectives of delivering one or more warhead, ठीक है, one or more warhead to predetermined targets. चलो, suppose that there is the missile, ठीक, और इसके ऊपर क्या होगा, warhead होगा, बिल्कुल जैसे हमारे लॉन्च व्हीकल्स टाइप, ठीक, क्लियर, and this is the warhead, clear? The warhead of the ballistic missiles may be single or may be multiple, ठीक है, अभी हम इसमें MIRV के बारे में when we will discuss about the MIRV, the multiple independent re-entry what vehicle, तो उस पर जब हम बात करेंगे देन वी विल फाइंड दैट द बैलिस्टिक मिसाइल्स हैविंग द मोर देन वन वॉरहेड्स, ओके, तो दैट मीन्स कि प्री डिटरमाइंड टारगेट यहाँ सेट करेंगे, कितने रेंज से इसको कितने एंगल से इसको लॉन्च करना है, इट विल बी डिसाइडेड एंड जस्ट फिक्स दैट एंगल एंड गिवन टू द कमांड फ्रॉम द कंप्यूटर, ओके, तो क्या हो जाएगा वो, अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइल ऑलवेज ट्रेवल इन द बैलिस्टिक पाथ, दैट मीन्स द पाथ इज नॉट चेंजेबल, उसके पाथ को वी कैन नॉट चेंज द पाथ ऑफ द बैलिस्टिक, ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल हमेशा पाथ को, ठीक, बैलिस्टिक मिसाइल्स एक्चुअली क्या आप कह सकते हो, इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम एनी लॉन्च पैड, ठीक है, पहले क्या होता था, पहले ये केवल लैंड से ही लॉन्च किए जाते थे, बट नाउ द बैलिस्टिक मिसाइल कैन लॉन्च फ्रॉम एनी लॉन्च स्टेशन, दैट मीन्स द लॉन्च पैड सिचुएटेड इन द ओशन, ठीक है, एट द लैंड और इन एनी एयरक्राफ्ट, ठीक है, चाहे वो सबमरीन से लॉन्च करना हो हमें जो ओशन में हो या वॉरशिप से करना हो, और from the aircraft or from the from the land launch pad, stable launch, we can launch this ballistic missile from any launch pad, ठीक है, clear, okay, now the next one is the cruise missile, ठीक है, actually the cruise missiles is the guided missile, this is not guided, ballistic is not guided missile, ballistic is just giving the just taking the command, ठीक है, from its launching, or you can say from its
टेक ऑफ पीरियड, ठीक है, टेक ऑफ रेंज, टेक ऑफ से इसने ले लिया, फिर ये ऊपर जाएगा और अपने आप खुद से क्या करेगा, री एंट्री करके टारगेट को हिट करेगा, ठीक है. वी कैन now the technology is more developed and we can destroy this ballistic missile in the exoatmosphere as well. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर सपोज दैट कि जैसे इन एनी कन्फ्यूज़न, जैसा वैसे होता नहीं है ये कि कोई कन्फ्यूज़न में मिसाइल चला दिया कोई कंट्री, ऐसा इतना ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल कोई नहीं होता. नहीं, पता चला मजाक मजाक में कि आज पाकिस्तान के साथ हमारी बहस हुई, लाओ तुम्हारे ऊपर एक मिसाइल छोड़ देते हैं, है ना. तो ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा होता नहीं है. बट इन केस ऑफ जैसे सपोज दैट इफ़ वी आर जस्ट टेस्टिंग, ठीक है, इफ़ यू आर जस्ट टेस्टिंग एनी मिसाइल, अब मिसाइल को हमने यहाँ से तो छोड़ दिया, इट विल क्रॉस द एटमॉस्फेयर. अगर इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, ओके, तो इट विल रीच एट द टारगेट जो हमने सेट किया है. लेकिन जब टेस्ट करते हैं तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हाँ, जिस रेंज पे हम चाहते थे उस रेंज तक ये ट्रैवल कर रहा है. आफ्टर दैट री एंट्री करने के बाद खुद ही क्या कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा. तो वी कैन डिस्ट्रॉय द मिसाइल्स एट द एक्सोएटमॉस्फेरिक या एक्सोस्फेरिक व्हाट रीजन ऑफ द अर्थ, ठीक है, वहां पे हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, चलो. द नेक्स्ट वन इज द क्रूज मिसाइल. हाँ, क्रूज मिसाइल के बारे में क्या बता रहे थे. द क्रूज मिसाइल्स आर एक्चुअली गाइडेड मिसाइल, ठीक है. गाइडेड मिसाइल दैट मीन्स द क्रूज मिसाइल इज द सेल्फ गाइडेड मिसाइल, ठीक है. ये क्या होते हैं, सेल्फ गाइडेड मिसाइल्स होते हैं. And it can carry the explosive payloads and propelled usually by a jet engine towards a land-based or the sea-based targets. चलो देखो, क्रूज मिसाइल, ठीक है. पहली चीज आप ये समझो, बैलिस्टिक मिसाइल्स इज फॉलोइंग द व्हाट, बैलिस्टिक पाथ. द क्रूज मिसाइल्स ट्रेजेक्टरी पाथ नेवर बैलिस्टिक, ओके, एंड comparatively they are lighter, ठीक है, and they are what more, क्या कह सकते हो इसको आप, more fast, that means speed is so high, ठीक है, of the cruise missile, ठीक है, supersonic hypersonic speed से. and we are just developing the what hypersonic cruise missiles, name is the BrahMos, right. okay, Moskova river and the what Brahmaputra river, Israel, okay. ठीक. अच्छा, प्लीज जस्ट फाइंड आउट दैट ब्रह्मोस इज ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया बाय विच कंट्री. प्लीज फाइंड आउट, थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो रहा है. फाइंड आउट, ओके, एंड कमेंट करो. ओके, चलो. तो दिस इज द क्रूज मिसाइल. क्रूज मिसाइल्स कैन लॉन्च्ड फ्रॉम एनी लॉन्च पैड, ठीक है, एनी लॉन्च पैड, and it just actually follow the what, follow the trajectory of target, that means कि अगर टारगेट्स आपका जहां कहीं भी जा रहा है, ठीक है, ओके, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज वगैरह में कि किसी ने एक मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च किया, रॉकेट लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च किया, ठीक है. एंड आफ्टर दैट सपोज दैट कि अगर उसने मिसाइल लॉन्च किया था किसी शिप के लिए, सॉरी किसी जेट के लिए, ठीक है, फाइटर जेट. तो अभी वो जैसे जैसे वो जेट या फाइटर जेट जैसे जैसे ट्रेवल करता है, उसी के पीछे पीछे मिसाइल भी ट्रेवल, ओके. दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ मिसाइल इज कंसिडर एज द क्रूज मिसाइल. okay, it follows the trajectory of targets, ठीक है, trajectory of targets. and this missile is actually designed with the high accuracy and can travel at the supersonic or hypersonic speed, ठीक है. self navigation capability is also here, ठीक है, in the cruise missile, and can fly ballistic extremely low altitude trajectory. low altitude that means it can travel just above the surface of the earth, वहां से भी क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है. फाइन. एग्जाम्पल्स आर द निर्भय एंड द ब्रह्मोस, ठीक है. इसके अगर क्रूज मिसाइल्स के एग्जाम्पल लोगे तो दिस इज द निर्भय
and brahmos. Okay, nirbhay and the brahmos. Nirbhay, fearless. Okay, the brahmos is the brahmaputra and the Moscow river. Fine. Okay. Acha, one more thing is here. Due to the self navigation capability of the cruise missile, the cruise missile is also considered as the fire and forget missile. Fire and forget missile, that means कि you just fire and forget about the result. ठीक है, that means कि it will what, it will bring the result. और ये ला के आपके हाथ में रखेगा रिजल्ट की यस you fired me, ठीक है, for that purpose and I will do that. Okay, so the India has the best fire and forget missile. It's known as the Nag missile. Which missile? Nag. Okay, fine. So here is some ballistic missiles. Ballistic missiles, what is the क्या कह सकते हो आप? Ballistic missiles, examples of the ballistic missiles. So Prithvi missiles, Agni missiles. Okay, so these are what? These are the ballistic missiles actually. Fine. Agni, Agni 2, 3, 4, 5, and just we are developing the Agni 6 missiles. And after developing the Agni 6 missiles, we are just capable for the what? Capable for the intercontinental attack. Okay, that means we can attack by the Agni missiles, using the Agni missiles from India to what? Europe, from India to Africa. Okay, so here is some types of the ballistic missiles are given. Types of ballistic missiles, and this type is given on the basis of what? On the basis of the range of the missiles. ठीक है, range of the missiles. So the first one is the short range ballistic missile. Short range ballistic. Okay, short range, that means the range is not more than 1000 kilometer. Okay, the below the missile which can hit the target, you can say which range is just below the 1000 kilometer is considered as the short range ballistic missiles. Example इसका, example is पृथ्वी मिसाइल. ओके, अच्छा, वन मोर थिंग, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनका पूरा एक सिस्टम हम पढ़ेंगे. पृथ्वी सिस्टम, अग्नि सिस्टम. इस सिस्टम में हमें ऐसा कुछ नहीं. देखो, वन मोर थिंग इज डिफेंस इज वेरी व्हाट, कॉन्फिडेंशियल मैटर. ठीक है, एंड एनी गवर्नमेंट फ्रॉम ऑफ एनी कंट्री, ठीक है, नेवर डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी, रिगार्डिंग द आर्मामेंट्स. ठीक है, तो अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हाँ पृथ्वी मिसाइल का रेंज इतने से बढ़ के इतना हो गया, तो आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कि सर इतना क्यों बढ़ गया. ठीक, क्यों? क्योंकि ये किसी को नहीं पता है. वाई? बिकॉज द टेक्नोलॉजीज आर द डेवलप्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट. ओके, एंड अगर वो नॉर्मली अगर ऐसे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि कोई भी कंट्री क्या करेगा, टेक्नोलॉजीज क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, चुरा सकता है, कॉपी कर सकता है. फाइन. तो बहुत ही सिंपल से हम समझते चलेंगे कि व्हाट इज द पृथ्वी सिस्टम, पृथ्वी मिसाइल सिस्टम, अग्नि मिसाइल सिस्टम. वी विल डिस्कस अबाउट द वेरिएंट्स ऑफ द पृथ्वी मिसाइल्स, अग्नि मिसाइल्स एक्सेट्रा. ठीक है, चलो. द सेकेंड इज द मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. Okay, medium range ballistic missile, that means the range is between 1000 to 3000 kilometer. Range is between 1000 to 3000 kilometer. ठीक है, so example is शौर्य missile. शौर्य. Okay, example is शौर्य. नाम थोड़ा सा याद रखो, नाम है ना. बहुत लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है. वाई? बिकॉज द नेम इज़ योर आइडेंटिटी. ठीक है, अगर नाम में कुछ रखा ना रहता
कि ऑल द गर्ल्स ऑल द बॉयज आर सेम, ठीक। घर वाले ने नाम दिया, भीड़ में तभी तो कोई नाम लेके बुलाता, तो आप बोल देते हो यस सर, यस आई एम दिस, आई एम दैट, राइट। तो ये इनका नाम भी याद रखो, शौर्य मिसाइल, ओके, शौर्य, साहस, करेज, ओके। अच्छा, जो ये नाम दिए जाते हैं इनका अपना क्या है, मीनिंग होता है, ऐसे नहीं कुछ भी रख देते हैं, ओके। चलो, द थर्ड वन इज द, दिस इज द मीडियम रेंज, द थर्ड वन इज द इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो इंटरमीडिएट रेंज, दैट मीन्स द रेंज इज बिटवीन द 3000 किलोमीटर टू 3000 टू 5500 किलोमीटर, 5500 kilometer, okay. The best example of the medium range, sorry, intermediate range ballistic missile is the Agni 4, Agni 4, Agni 4, ठीक है। अग्नि 1 to 4 सारे आते हैं इसमें, सॉरी, अग्नि 1 to 4, ओके। नाउ दिस इज द इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा, अब 3000 किलोमीटर है तो ठीक है, अपना बगल में चाइना वाइना तक तो कवर कर ही सकते हैं इसकी वजह से, है ना, ईजिली। नेक्स्ट वन इज द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, द फोर्थ वन इज द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक, क्लियर, ओके। हाँ, रेंज लिखने का इसका, the range of the intercontinental ballistic missile is more than 5500 kilometer, okay, more than 5500 kilometer. The example is Agni 5 and 6, Agni 5 and 6, the 6 क्या, 6 is underdeveloping, okay, the 6, fine. Okay, so here is some types of the cruise missile is also here. Always when we are just talking about the ballistic missile, so ballistic missile is always divided on the basis of the range, because the ballistic missile is covering the greater range comparatively cruise missiles, okay. And but when we are just talking about the cruise missiles and types of the cruise missile, then the cruise missiles are classified on the basis of what, on the basis of speed, ठीक है, on the basis of speed, clear. So the first one is here the subsonic cruise missile, the first one is the subsonic cruise missile, clear. When we are the sonic, okay, or you can sonic, तो नेम हो जाएगा सोनिक, ठीक। सोनिक इज रिलेटेड व्हाट, साउंड, okay. So the speed of the missiles, or you can say the speed of the cruise missiles is measured, ठीक है, on the reference of what, reference of the speed of sound, clear. So first is the subsonic cruise missiles, that means the less than the speed of sound, that means the speed of these type of missiles is less than the speed of sound, that means approx 1.8 to 1.9 Mach speed, किसकी मिसाइल की। तो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, किसी को पता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, पता है तो कमेंट करो, नहीं पता होगा तो अभी ये क्लासिफाई करने बाद मैं बताऊंगा, फाइन, ओके। तो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सबसोनिक क्रूज मिसाइल इज द निर्भय मिसाइल,
विच वन? निर्भय, fearless, meaning of निर्भय, संस्कृत word निर्भय, then meaning is a fearless. Okay, the second one is the supersonic cruise missile. Supersonic cruise missile. What is the speed of sound? Supersonic cruise missile. Okay, actually supersonic cruise missile is those missiles which speed is 2 to 3 times more speed than speed of sound. Okay, अगर हम बात करें तो इट्स अ 2 to 3 Mach. Listen, 1 Mach, that means denoting the speed of sound. ठीक है, साउंड की स्पीड को बताता है 1 मैक. ओके, तो सेकंड इज द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. ये वैल्यू जानना चाहता हूँ मैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मैक. ठीक है, ओके. तो थर्ड वन इज द supersonic is done. Okay, the third one is the hypersonic cruise missile. Hypersonic cruise missile. Okay, that means the hypersonic cruise missiles having the speed is 5 times more than speed of what? Sound. ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड कितने टाइम्स? 5 टाइम्स. दैट मीन्स कि इट्स अ मोर देन 5 मैक. ठीक है, मोर देन 5 मैक, 5 मैक से ज़्यादा होगा ये. द एग्जाम्पल इज, अच्छा इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा सेकंड का. द सेकंड एग्जाम्पल इज द ब्रह्मोस. Okay, and the hypersonic example is the BrahMos 2. Okay, BrahMos 2. Actually India is just working on the development of the BrahMos missiles, and both the countries are together planning for the exporting the BrahMos missile. ठीक है, कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट करेंगे अनदर कंट्रीज को. आई थिंक बड़ा एडवांस मिसाइल है ये हमारा ब्रह्मोस मिसाइल. और अगल बगल कहीं है नहीं वैसा मिसाइल. अगल बगल इन द सेंस ऐसा नहीं घर के अगल बगल, मतलब उधर जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, ठीक है, तो उधर है नहीं ऐसा. ओके, some classification is also given here, and this is the missiles are categorized on the basis of the what? On the basis of the launch pad. ठीक है, suppose that the some missiles are here which is launched from the surface to the surface. Okay, that means surface to surface missiles. That means लैंड से लॉन्च करेंगे, टारगेट कहाँ होगा? वो भी कहाँ पे होगा? सरफेस पे होगा. फाइन. so these the kind of some missiles like the Prithvi. Okay, some are here which is the surface to air. That means the missile would be launched from the surface and hit the target at the in the air. Okay, in the air the target is here, ठीक, and we are just launching the missiles from the land surface. Clear? So the Akash and Trisul is the best example of that category. Some is here which is the surface, coastal surface to sea. That means coastal region से हम उसको launch कर रहे हैं, कहाँ के लिए? sea के लिए. Fine. So these are the Akash Trisul is also here. ठीक है. And air to air missile. Okay, that means कि air to air, that means we are just launching that missiles from the aircraft, from the helicopters. ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उसको लॉन्च कर रहे हैं. और किसको हिट करने के लिए? किसी अनदर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स को, क्योंकि टारगेट भी कहाँ पर है? एयर में. तो दिस is considered as the air to air missile, and the best example of this category is the Astra missile. Fine, इसमें लिखा हुआ है तो लिखाने की जरूरत नहीं है, टाइम किलिंग होगा. ठीक, उसमें कुछ समझाना भी नहीं है, तो यू कैन जस्ट रीड आउट दिस whenever you got the PDF. ठीक है.
ओके, चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं अबाउट द पृथ्वी मिसाइल सिस्टम. In the defense system, our major focus would be the about the missiles. Okay, and after that we have to discuss about the warships. ठीक? After that we have to discuss about the submarines, and then we will discuss about the some LCA, some LCH. This is the light combat aircraft, light combat helicopter. Fine, and आफ्टर दैट कुछ ऐसे हमारे क्या रिसेंट डील्स के बारे में बात करना है रिगार्डिंग द डिफेंस सिस्टम, एंड इन विच द लाइक द सम missiles technology, you can say the anti-ballistic missiles technology is also here, including the S-400 missile system. Okay, सब जानते हो S-400 क्या है. ठीक है, दिस इज द एक्चुअली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल. एंड जस्ट वी आर जस्ट व्हाट ट्रेड दैट फ्रॉम द व्हाट यहाँ से रसिया से आई थिंक. हाँ, S-400. ठीक है, वहाँ से हमने उसको लिया था. एंड आफ्टर दैट we have to discuss some torpedo also. Torpedo is what? Torpedo is actually weapons which is launched from the submarines. ठीक है, तो उसके हम बात करेंगे. LC और LCA एंड LCH के बारे में भी we will discuss. ठीक है, आफ्टर दैट राफेल के बारे में हम बात करेंगे. ठीक, राफेल को थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे किससे, F-16 से उसका कंपैरिजन करेंगे. F-16 इज़ व्हाट? F-16 इज़ एन अमेरिकन एयरक्राफ्ट. ठीक है, और आई थिंक कि बहुत ही अभी उतना एडवांस नहीं है जितना राफेल है. एंड MiG-27, व्हाट इज़ MiG-27? Mirage-21, व्हाट इज़ Mirage-21? ठीक है, तो MiG-27 इस ठीक है, हमने रसिया से उसको क्या किया था, ओन किया था, ख़रीदा था. ठीक है, तो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दैट मिराज, मिग. ठीक है, अनदर LCA. ठीक, एंड वी विल डिस्कस सम अबाउट सम टैंक्स ऑल्सो. ठीक है, अर्जुन टैंक, अबाउट अर्जुन टैंक. अर्जुन टैंक इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड द वन ऑफ द मोर एडवांस टैंक ऑफ इंडिया. बहुत एडवांस है, बहुत बेस्ट है. क्यों है, कैसे है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ना जिनके पास ऐसे टैंक्स हैं कि दे टैंक्स कैन ट्रेवल इन एनी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट. ओके, एनी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, दैट मीन्स कि अगर दे आर ट्रेवलिंग ऑन द सरफेस, ऑन द लैंड सरफेस, तो दे कैन ईजली रन, ईजली ट्रेवल. when it enters into any what, in any marshy land. Okay, so marshy land में भी it can travel very easily, it can run very easily. when it enters into any water bodies, okay, किसी भी suppose that छोटी river या कोई भी ऐसा मिल जाए रास्ते में, जैसे कोई कैनाल मिल जाए, राइट, तो it have the ability, they have the ability to across them. ओके, वो बिल्कुल वैसा हो जाता है, बोट जैसा हो जाता है, तैर के निकल जाता है. ओके, दिस इज़ द टेक्नोलॉजी एक्चुअली. India doesn't have the technology like this, but India is working on this, definitely working on this. और करेगा, क्यों करेगा, ज़रूरत है उसको, है ना, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि द थ्रेट्स, बॉर्डर थ्रेट्स ऑफ द इंडिया आर वेरी हाई. ओके, डे बाई डे हमारे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज, नेबर कंट्रीज हैं जो क्या कर रहे हैं हमें. ठीक है, सराउंडिंग में क्या कर रहे हैं, घेरने का काम कर रहे हैं. फाइन, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ज़रूरी है, स्पेशली डिफेंस टेक्नोलॉजी. चलो बात करते हैं पृथ्वी मिसाइल सिस्टम के बारे में. द फर्स्ट इज द, हाँ, साउंड स्पीड. कोई कमेंट नहीं आया साउंड स्पीड का. ओके, ऑनलाइन है कुछ, ऑनलाइन हो साउंड स्पीड. चलो यही कमेंट कर दो कि सर नहीं पता, आप ही बता दो. ओके, चलो देखो, 332 मीटर पर सेकेंड. कितना? 332 मीटर पर सेकेंड द स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, दैट मीन्स कि एक सेकंड में साउंड कितना ट्रेवल करता है, 332 मीटर. एंड सपोज दैट साउंड तो आप नहीं देख पा रहे हो, साउंड को केवल आप सुन सकते हो. फाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस स्पीड से आपके सामने से निकलता है 1 सेकंड में 332 मीटर, तो आप देख पाओगे उसको, हो सकता है कि शायद देख भी ना पाओ और वो निकल जाए. तो उस स्पीड से, और इसका व्हाट, इट्स अ 5 टाइम्स मोर देन दिस, 5 times more than this. I think 1660. Okay, 1660 meter per second. 1660 meter per second. That means कि
1.66 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में कितने किलोमीटर, 1.66। एट दिस स्पीड ब्रह्मोस विल ट्रेवल, ब्रह्मोस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। कोई इसको देख पाएगा, स्पीड से निकलेगा जूम करके, बिल्कुल, है ना। चलो पृथ्वी मिसाइल सिस्टम, ओके। तो व्हाट पृथ्वी मिसाइल सिस्टम at the created that was the first indigenous missile developed, ठीक है, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडिया। सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल है ये, ठीक है, सरफेस टू सरफेस, ओके। एंड शॉर्ट रेंज है, हमने जब भी क्लासीफाई किया था तो वी फाइंड दैट देयर इज द एग्जांपल ऑफ शॉर्ट रेंज मिसाइल इज द पृथ्वी शॉर्ट रेंज मिसाइल, ओके, क्लियर, ओके। एंड डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ, और कब किया गया था डेवलप, अंडर द आईजीएमडीपी प्रोग्राम, ठीक है, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ अंडर अंडर आईजीएमडीपी प्रोग्राम, क्लियर, दिस इज द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। एंड द रेंज इज अप टू 150 टू 300 किलोमीटर। व्हाट इज द रेंज, जब स्टार्टिंग में था पृथ्वी वन, द वेरिएंट ऑफ पृथ्वी मिसाइल, द पृथ्वी वन, दैट वाज द रेंज इज द 150 टू 300 किलोमीटर, ठीक है। बढ़ाया गया बाद में, इसके वेरिएंट्स बढ़े ना तो इसकी रेंज बढ़ी, ठीक है, ओके। एंड द पेलोड कैपेसिटी इज 500 kg up to 250 kilometers and 100 kg up to 150 kilometers. That means, ऐसे देखो, war head payload capacity is the 500 kg up to 250 kilometer, okay, and 1000 kg up to 150 kilometer. That means कि war head जितना ज़्यादा हल्का होगा वो क्या होगा, उसका रेंज उतना बढ़ जाएगा। एंड व्हेन द वॉर हेड इज इंक्रीजेड एंड द वॉर हेड गेट हैवियर, देन द रेंज इज रिड्यूस्ड, ओके। एंड द पृथ्वी मिसाइल हैव टेंडेंसी टू कैरी द बोथ टाइप्स ऑफ द पेलोड्स, कन्वेंशनल पेलोड्स एज वेल एज द न्यूक्लियर पेलोड्स, ठीक है। इट कैन कैरी द न्यूक्लियर वॉर हेड एज वेल, ठीक है, चलो। Some variants are here, like what is the land variant of the Prithvi missile, the land variant, that means जो surface बात कर रहे हैं जिसके बारे में, तो land variant of the Prithvi missile is known as the Prithvi, land variant Prithvi, ठीक। when we are just discussing a naval variant, so naval variant is known as the Dhanush, this is the Dhanush. And when we are just discussing about the submarine variant, okay, submarine variant, then the name is changed, the name is the Sagarika, क्या बोलते हैं, सागरिका, ओके, ठीक है, सागर से पैदा हुई है ना, something कुछ originated from sea, right, this is known as the Sagarika. So this is the submarine variant, and naval variant is Dhanush. Dhanush is what? Dhanush is what? Weapon, सबको पता है ना। अब इंडियन मिथोलॉजी में धनुष एक बहुत क्या ऐसा वेपन होता था जहाँ जिसकी हेल्प से हम क्या करते थे, किसी से हमें लड़ाई करना है तो दूर खड़े होकर के वहाँ से हम क्या कर सकते थे, लॉन्च कर सकते थे, क्या, एरोज वगैरह, फाइन, ओके। तो धनुष संस्कृत वर्ड, ओके, बो मीन्स वर्ड धनुष, चलो। एंड इट्स डेवलप्ड एज अ बैटल फील्ड मिसाइल्स, कुड कैरी अ न्यूक्लियर वॉरहेड इन इट्स रोल एज अ
tactical nuclear weapon. This is the, मैंने बताया ना, this is a tactical nuclear weapon. That means we cannot easily frequently, we cannot use, we cannot use it frequently. ठीक है, in any types of the war. अब ऐसा नहीं कि अगर बॉर्डर पे एलओसी पे गोलीबारी हो रही है, सीज फायर वायलेट हो रहा है, जस्ट ले गए पृथ्वी दाग दिए, ठीक है, नहीं, अभी अभी ऐसा नहीं कर सकते अपन. सही, फाइन, ओके. तो हियर इज सम वेरिएंट्स आर गिवन. पृथ्वी मिसाइल, द पृथ्वी वन. पृथ्वी वन. पृथ्वी वन इज अ सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल मिसाइल. सिंगल स्टेज, कैसा ये, लिक्विड फ्यूल, ठीक है, सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल. एंड द वॉरहेड पेलोड कैपेसिटी, वॉरहेड पेलोड इज अबाउट 150 kg. कितना, सॉरी नॉट 150, वो तो रेंज है, 1000 kg. ओके, एंड रेंज अप टू 150, रेंज अप टू 150 किलोमीटर. क्लियर. एंड सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड. ठीक. एंड ऐसा बोला जाता है कि आर्मी वर्जन इंडक्टेड इन इंडिया आर्मी इन 1994. यस, 1994 में इंडक्ट किया गया, इंडक्टेड इन 1994. ओके. एंड इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर. ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर, देखो समझो इसको, ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर. ठीक है. बॉर्डर मूवी देखी है आपने, है ना, बॉर्डर मूवी देखी है. बॉर्डर मूवी में एक किरदार रहता है मथुरा दास, याद है मथुरा दास, है ना. ठीक. मथुरा दास, सुदेश बेरी, एक्टर नेम ना सुदेश बेरी ना, ऐसा कुछ समथिंग. हम यहाँ पे मूवी डिस्कस नहीं करेंगे अपन. चलो, तो एट द लास्ट ना, आप जब देखते हो कि जब वो लीव लेके घर जाता है, नहीं जाता, वापस आता है, तो एक उसके पास जीप रहती है. ओके, एंड फ्रॉम दैट जीप देयर वाज अ सेटअप ऑफ लॉन्चर. ठीक है, वहाँ पे एक सेटअप होता है लॉन्चर का, एंड वहीं से वो क्या करता है, वो मिसाइल्स लॉन्च करता है. कहाँ पे, टैंक्स वगैरह. ओके, सो द पृथ्वी वन कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर. दैट मीन्स ऐसा इरेक्टर लॉन्चर जिसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. फाइन. तो पृथ्वी वन कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम हियर. ओके, ठीक है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द पृथ्वी टू. पृथ्वी टू. पृथ्वी टू, दिस इज द सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल. सेम सिंगल स्टेज है ये, एंड द लिक्विड फ्यूल. फाइन. एंड द वॉरहेड पेलोड इज 500 kg. वॉरहेड पेलोड इज 500 kg. Clear. And range is up to, obvious, when the payload weight is get reduced, then it increases the ranges, 350 kilometer. And Air Force version of this inducted in 2003. ठीक है, 2003 में इसको इंडक्ट कर लिया गया था. फाइन. नेक्स्ट देख लो, पृथ्वी थ्री. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे. नेक्स्ट वन इज द पृथ्वी थ्री मिसाइल. पृथ्वी थ्री और ये पृथ्वी थर्ड. दिस इज द सॉलिड फ्यूल्ड टू स्टेजेस. ओके, टू स्टेजेस. एंड यहाँ पे था फर्स्ट स्टेज सॉलिड फ्यूल था, सेकेंड इज द लिक्विड फ्यूल.
liquid fuel. Clear? Okay. ऐसा warhead is 1000 kg and range up to 350 किलोमीटर. ओके, पहले में क्या था, 1000 kg का वॉरहेड था, लेकिन रेंज वाज that time is 150 kilometer. Now the latest you can say the variants of this is the Prithvi 3, and it can carry the 1000 kg payload up to the 350 kilometer. And if we reduce the warhead capacity 500 up to 500 kg, then the range is increases up to 600 किलोमीटर. कितना? 600 किलोमीटर. 500 kg कम नहीं होता साहब, ठीक है? इतना मत सोचो कि आधा कर दिया बिल्कुल, ठीक है? तो 500 kg कैन कैरी द 500 kg up to range of the what? Up to range of 600 kilometer. The first tested in 2003, and the INS Subhadra, ठीक है? This is a what? This is a warship, INS Subhadra, इंडियन नेवी का, ठीक? वहाँ से पहली बार इसको इन 2003 में टेस्ट किया था. फर्स्ट टेस्टेड इन 2003. So this is the variants of the Prithvi missile. So in the next class we will discuss about the Agni missile system. Okay. So for today this is enough. And कुछ हो तो पूछना आप मुझे, है ना? क्वेश्चन, कमेंट जो भी कहना कर लेना. And for today, thank you so much. We'll meet you tomorrow. Thank you. Jai Hind.